Okay, good afternoon, Alma. I'm back with another video. I wanted to make the video before only, but because my health was not fine, so I couldn't, get the energy to make a shoot a video. So today I'm back with another video, which is the continuation of the video that the series of video I was doing about the chapter in science, transportation, and animals and plants. So we discussed in the last video about excretion, and we covered all the topics about transportation in animals. But today we're going to talk about transportation in plants. Okay, how the transportation takes place in plants. Okay, so there are two important organs, I would say, not organs actually, but yeah, there are two important parts in plants जिससे क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस ओके इन प्लांट्स इन द botanical organisms. Okay, so first is xylem and the other one is phloem. Okay, so it's like vessels. These xylem and phloem are like the vessels. Okay, so xylem and phloem. First is xylem. What is xylem? Xylem is responsible for transporting water and minerals from the roots to the leaves. तो रूट्स पे व्हेन यू पुट द वाटर ओके आई मीन जब भी हम लोग प्लांट्स को वाटर करते हैं तो क्या होता है रूट्स आर द सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द प्लांट जिसके हेल्प से क्या होता है इट होल्ड्स द सॉइल द रूट्स एंड दैट हेल्प्स द प्लांट टू स्टे अपराइट और स्टैंड राइट एंड तो फिर वो रूट्स वो सॉइल के कांटेक्ट में होता है एंड देन व्हाट वी डू वी जस्ट वाटर द प्लांट आई मीन द सॉइल वेयर द प्लांट इज रूटेड ओके एंड वहाँ पे रूट्स क्या करता है पानी को लेके जाता है वाटर एंड मिनरल्स एंड इट टेक्स इट टू द लीव्स ओके एंड लीव्स में क्या होता है व्हाट हैपेंस लीव्स में फूड इज प्रिपेयर्ड और whichever part of the plant जिसमें plants I mean the water is required. Okay, so then we have another elaborate explanation of what xylem is. Okay, so xylem is a special tissue that carries water and minerals. Okay, xylem are the special tissues that carries water and minerals from roots to upper body parts. Okay, not only the plants, it carries it to the upper body parts. Matlab, not body, it's like the plant body parts. Okay, it's not the human body. Okay, it's about the talking about the plants here. सो प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है अपर बॉडी पार्ट्स होता है उसमें लेके जाता है ये xylem वाटर एंड मिनरल्स गॉट इट देन रूट प्रेशर अलाउज वाटर टू गेट पुश्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन रूट प्रेशर जो होता है वो क्या करता है इट अनेबल्स और इट टेक्स केयर दैट द वाटर इज मूविंग इन एन अपवर्ड डायरेक्शन ओके सो दिस इज अ स्टफ. However, it works well for short plants, not for the tall plants. Okay, but ये जो होता है, this is mostly working in short plants. Okay, not the tall plants. I don't know what I'll tell you about it. Okay, what is the case with the tall plants? But this is the case with the short plants की जो रूट प्रेशर होता है रूट का जो प्रेशर होता है वो क्या करता है उसको ऊपर की तरफ पुश करता है वाटर को सो दैट इट कैन गो अप. टॉल प्लांट्स में क्या होता है बिकॉज द डिस्टेंस इज टू मच. ओके, रूट और जो अपर पार्ट्स है प्लांट का द प्लांट बॉडी उसका जो डिस्टेंस होता है इट्स टू मच. दैट्स द रीज़न कि इट कैन नॉट. ओके, रूट प्रेशर तो वो रूट के जो आसपास वाला एरिया है वो वहीं पर रहेगा ऑब्वियसली राइट. तो वो वहाँ तक रहेगा एंड दैट्स हाउ इट कैन नॉट कैरी it to the pressure will not be sufficient to push the water there. So we have different mechanisms for that. Now due to transpiration pull is another way by which water gets transported in plants. Transpiration pull bhi hota hai because this plant gets there's a mechanism called transpiration which happens in the leaves by which the plant loses excess of water. So due to transpiration, suction is created in the xylem vessels. Xylem vessels में क्या suction is like something which is sucking something
up. In the case of plant, it is sucking it up, right? So yeah, it's sucking means you're just something is down and you're just doing it to bring it to the surface, right? वो ऊपर की तरफ लाने के लिए we do that. So that is called suction in the case of plants. So due to transpiration, suction is created in the xylem vessels and water moves in the upward direction, and that's how water is moving in the upward direction. Got it? Now, next we have the next issue called the phloem. So phloem transports organic nutrients produced in the leaves to various parts of the plant. Now phloem का काम क्या होता है? पहला water जो है वो xylem करता है. I mean xylem takes hold of all the functions of like water regarding functions that has to take place in the plant body, and on the other hand we have this phloem tissue which takes care of the nutrient requirement of the plant, right? So phloem transports organic nutrients produced in the leaves, जो कि leaves में बनता है. We have done this chapter like nutrition in plants. So we talked about photosynthesis. The process of photosynthesis is what? It's a preparation of food in the presence of sunlight. Oxygen is a byproduct of it, of carbon dioxide and chlorophyll, which is the green pigment. Okay, it happens in the leaves. Got it? So now we have this elaborate description again for phloem as well. So phloem allows the movement of food material in the plants. Movement of food into other parts of the plant is called translocation. Movement of food को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. वाटर को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जिसके हेल्प से वो it just exits the plants. Excess water जो बॉडी मतलब प्लांट से बाहर निकल रहा है, that's called transpiration. But translocation क्या होता है? It's the movement of food through the phloem, okay, to other parts of the plant wherever it is required. Okay, that's called translocation. Got it? So due to active transport, the concentration of water inside the phloem cells decreases. Thus water flow from xylem moves into the phloem cells by the process of osmosis. तो अब क्या होता है? Due to active transport, the concentration of water inside the phloem. See, so phloem is not like it's totally like there's no water present only. I mean water in phloem में भी पानी होता है, but it's not like the xylem. Okay, so क्या होता है कि due to active transport, the concentration of water inside the phloem cells decreases. Thus water from xylem move into the phloem cell by the process of osmosis. तो osmosis क्या होता है? Moving of some kind of substance from a lower concentration to a higher concentration to a lower concentration to fill up the void that is being created over there or which is there. Okay, void मतलब जो खालीपन, जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा. Okay, for example I'm giving you this thing, an example of kishmish, right? Kishmish is what? This what do you call it? I forgot the name, the English word for it. Resin बोलते हैं. Resins को kishmish नहीं, kishmish we call resins. I don't remember. Okay, sorry, my bad. Yeah, so वो kishmish में क्या होता है? We see the dry. It's a dry fruit of what? Grape, right? Grapes. That's a pulpy thing. And जो kishmish होता है, what is it? That is the dried version of it, right? With lots of I don't know how it is made. I think like it is put in sugar solution and stuff, and that's how, or it is like naturally dried. I haven't seen. It's a good thing. I will surely go and I will watch how our resin, kishmish is made. Okay, so क्या होता है कि बिकॉज अगर हम लोग किशमिश को पानी में डालेंगे तो किशमिश क्या होता है? ड्राई होता है, राइट? एंड वो बहुत सिकड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पे पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है. सेम विद द ग्राम्स ऑल्सो. ग्राम मतलब वो चना जो हम लोग खाते हैं, दैट चना थिंग, ब्राउन कलर.
2 ग्राम होता है, एंड फिर उस वो जो ड्राइड होता है तो पानी का अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो इट विल सीप इनसाइड that whatever that gram or this kishmish, and it will make it what, it will swell. I mean that fruit or any that object or that food item will swell, right? Swell मतलब फूल जाएगा, okay? So yeah, it will तो क्या हुआ कि जो कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो हायर था एज कम्पेयर टू द वाटर कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी द फूड आइटम कॉन्सेंट्रेशन, तो इसलिए वो पानी वहाँ पे चला गया. आई मीन it moved to the area of lower concentration, got it, to balance the thing. That's called osmosis. So which increases the concentration of water inside the phloem cells than adjacent phloem cell. Increased concentration causes the cell to increased concentration causes the cell to exert high pressure on the walls. तो अब क्या होता है, बिकॉज प्रेशर एक्सर्ट होता है वॉल्स पे, ड्यू टू विच द फूड मटेरियल्स मूव टू एडजेसेंट सेल्स दैट हैव लो प्रेशर, एंड जिसके वजह से क्या होता है, लो प्रेशर फूड वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ पे लो प्रेशर है. ओके, मतलब इट इज़ टॉकिंग अबाउट हायर एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कि जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ पे जो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला जो चीज़ है वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाला चीज़ में मूव कर जाएगा टू फिल दैट void or that empty space. Got it? Move to the adjacent cells that have low pressure. In this way the food materials are transported according to plant needs through the phloem tissue. Okay, now we come to transpiration. Transpiration is the process of water movement through a plant and its evaporation from aerial plants, mainly from leaves. ठीक है, तो पानी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. ओके, देयर इज दिस ट्रांसपिरेशन सक्शन थिंग हैपनिंग एंड देन इट्स मूविंग, प्लांट पार्ट्स में जाता है थ्रू जाइलम, एंड देन व्हाट हैपन्स, इट इज लीविंग द एक्सेस ऑफ इट द प्लांट, आई मीन द एक्सेस ऑफ वाटर इन द प्लांट विच इज प्रेजेंट देयर, इट exits the plant or it leaves the plants through the leaves by the process of transpiration. Okay, next we have, it helps in the movement of water and minerals from roots to shoots. ठीक है, roots से shoots तक, shoot is the upper body part of the plant, तो वहाँ तक जाने में उसको help करता है. ठीक है, क्या, transpiration. Then we have root pressure and transpiration pull. Root pressure pushes water and nutrients up the xylem. Got it? Transpiration pull aids in the movement of water up the plant. Okay, now we come to leaf structure. What is leaf structure? Leaves have specialized structures like stomata, which regulate gas exchange and transpiration. Obviously, we know that, we have done a entire chapter on it. Stomata and this thing. Got it? Next is this. What is it? Yeah, the network of veins in the leaf aids in the transport of water, nutrients and sugars. So network जो है veins, leaves में, veins में, तो that is acting as what, ट्रांसपोर्टेशन में क्या, वाटर का एंड न्यूट्रिएंट्स जो भी होता है. ठीक है, एंड शुगर इज व्हाट, द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड, राइट, कार्बोहाइड्रेट थिंग. नेक्स्ट वी हैव द लास्ट टॉपिक विच इज फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट. Okay, photosynthesis is in the leaves produces glucose, which is then transported through the plant via the phloem. ठीक है, photosynthesis leaves में जो produce होता है, leaves में जो glucose produce होता है by the process of photosynthesis, वो किसके help से transport होता है, through phloem, right? I just told you that the energy produced through photosynthesis is utilized for various metabolic processes within the plant. और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, उससे वो प्लांट का डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करने में हेल्प करता है. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द चैप्टर. ओके, फ्लोएम एंड xylem एंड फ्लोएम एंड कैसे वो फंक्शन करता है. वी टॉक्ड अबाउट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशनल पुल, रूट प्रेशर, ऑल ऑफ इट. सो या, दिस इज द चैप्टर
this chapter, which is transportation in animals and plants. I hope it's clear to you. I really hope that you will watch the video very keenly and properly, and you will try to grab up the important parts and make notes of it, and then you can ask me your doubts in the class, right? So yeah, see you with the next chapter, and I will upload the video soon of the next chapter that I'll be doing with you. Okay, so bye, take care, Alma, see you.